ठीक, कोई डाउट तो नहीं है लक्ष्य? नो सर। ओके ओके ओके, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. Next topic is product of two vectors. Two vectors. Okay, so in vectors we have a two type of product: scalar product and vector product. Okay, so from the word only हमें समझ में आ रहा है scalar means which will finally give us a scalar quantity, and the vector product will give us at last a vector quantity. Okay, Kush, my voice is audible? Okay, Kush, so we have just started the next topic. Homework हो गया था Kush? Okay. Second thing, I need to increase your timing, class timing, ठीक है? क्योंकि अब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, कोर्स और जल्दी हमें कंप्लीट करें. तो इज पॉसिबल कि सैटरडे हम कर दें 7 to 9 और संडे कर दें 10 to 12? क्वेश्चन लक्ष्य पॉसिबल होगा? है ना, कि जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा उतनी जल्दी आप फिर रिवाइज कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन आई गॉट योर मैसेज. ठीक है, तो कल हमारी क्लास है 10 to 12. ठीक है, प्लीज लेट नहीं आना क्योंकि काफी जल्दी मुझे और टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं. डेट शीट आ गई है, सबने देख ली ना डेट शीट? ओके, ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, इन प्रोडक्ट, फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सपोज वी हैव अ टू वेक्टर्स ए एंड बी. ओके, वी हैव दीस टू वेक्टर्स. अगर हमको इसको मल्टीप्लाई करें then we have two type of products. First is scalar product, second is vector product. Okay, what is a scalar product? Scalar product will at last give us a scalar quantity, and vector product will give us at last a vector quantity. Okay, so today's topic is scalar product, scalar. ठीक है, और इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और डॉट प्रोडक्ट or dot product of two vectors. Dot product of two vectors. Okay, so this is the first topic. Dot क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके प्रोडक्ट, इसको हम डिनोट करते हैं by dot. That's why this is called a dot product. Let A and B. Let A and B are two non-zero vectors. Are two non-zero vectors. Okay. Then dot product, then dot product, dot or scalar product. Okay, dot or scalar product, dot or scalar product, or scalar product is denoted by a dot b, okay, and defined as a dot b is equal to magnitude of a, magnitude of b into cos theta. Okay, what is the theta? Theta is the angle between a and b. Okay, and theta is what? Theta is greater than equal to 0 and less than equal to pi. Okay, so इसको हम denote कर देते हैं by this. So suppose we have this vector a and we have this another vector b. This is vector a and this is b, and this is the angle between them. The angle is theta. So if we need to find the dot product, then what we will do, we will find the magnitude of a, we will find the magnitude of b, and we will multiply that with the cos theta. What's the value of theta? Theta value should be 0 and pi, from 0 to pi. Okay. If
we will write some points. If either A0 or B0, vector A0 or B0, then theta is not defined. Theta defined ही नहीं होगा, जो vector ही नहीं है, is not defined. Okay, and in this case, and in this case, and in this case, and in this case, we define A dot B, and we define A dot B is equal to 0. Okay, so if A is 0 or B is 0, then we will say that A dot B is equal to 0. Please note down this and let me know if you have any doubt in this. Okay. Let's say I got your message. Good, हो गया complete. Shall we start next? Push. Okay, good. Now next is some observations. Okay, observations. First is A dot B जो भी होगा हमारा A dot B real number होगा, is a real number, है ना? हमने starting में डिस्कस किया था कि स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी देगा, तो A dot B एक रियल नंबर हमें मिलेगा, हमें वेक्टर नहीं मिलेगा. We have two vectors A and B, and if you find the dot product of these two, then it will give us a real number. Okay. Second, let A and B be two non-zero vectors. Then A dot B is equal to 0 if and only if मुझे बता सकते हैं A and B तो नॉन जीरो हो गया and A dot B हमें 0 मिल रहा है, तो ये किस कंडीशन में होगा? वेरी गुड क्वेश्चन लक्ष्य. A dot B 0 है ना, A dot B is equal to 0, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B into cos theta. वो कह रहे these two are non-zero, तो ये तो 0 नहीं है. Then in that case this will cos theta is equal to 0. Cos 0 कब होते हैं लक्ष्य? 1. When theta is equal to लक्ष्य. So when theta is between 0 and pi. नहीं, अगर थीटा हमारा 30 हो गया तो A डॉट बी 0 तो नहीं होगा, है ना? हमारा A डॉट बी 0 आना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, तो इसका मतलब cos थीटा 0 होना चाहिए. cos 0 कब होता है लक्ष्य? when theta cos 0 कब होगा? when theta is equal to 90 degree. 90 degree. Okay, so इसका मतलब अगर टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, then that means theta 90 होगा. that means A and B are perpendicular to each other, are perpendicular to each other. Okay, so A dot B real number है, A and B non-zero vectors हैं, उनका A dot B 0 होगा अगर theta 90 है. Okay, third, if theta is equal to 0, theta अगर 0 है तो क्या होगा? Then A dot B is equal to magnitude of A into magnitude of B. ठीक है, अगर थीटा 0 हो जाता है तो डेफिनेटली cos थीटा 1 हो जाएगा. So A dot B is equal to this one. और A dot A अगर है तो मुझे बता सकते हैं लक्ष्य क्या होगा? A dot A लक्ष्य 0. why 0? A dot A dot if we have a vector A,
then the angle between vector A and A कितना होगा? 90. By 90. Suppose we have this vector A, ये एक vector A, ठीक है? इस vector और इसी के बीच में angle कितना होगा? 90 कैसे हो जाएगा? 90 तो ऐसे होता है ना? So 180. 180, okay, ठीक है? 180 कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा? A dot A, this is equal to 0 होता है वैसे. Actually, if we have a same vector, इसमें अगर हम angle कहते हैं, so angle is 0, ठीक है? So A dot A is equal to क्या हो जाएगा? Magnitude of A into cos 0 degree. So this is equal to magnitude of A square, because cos 0 is 1. Okay, so that means अगर हम dot product find कर रहे हैं between the same vector, then this will be equal to उनके magnitude का square. Clear हुआ इतना? Alexia, Kush? Yes. Kush, this clear? Okay, okay. Next is if theta is equal to pi. Theta अगर pi होगा तो cos theta कितना हो जाएगा? Alexia? Cos pi की वैल्यू कितनी होती है? 0. -1, not 0. Also, ठीक है, 90 में 0 आता है. So A dot B, this will be equal to magnitude of A, magnitude of B into cos pi. So this will be equal to minus magnitude of A, magnitude of B. Okay, next. Now check करते हैं फिर. Next, I dot I is equal to J dot J equal to K dot K. तो बता सकते हैं लक्ष्य कितना है आंसर? लक्ष्य I dot I, J dot J क्या होता है? I cap? I cap क्या होता है? Lexia, what is I cap? What is the I cap, J cap, K cap? Lexia कितना होगा? I dot I J, sorry, कुछ I dot I J dot J, K dot K. Very good. लक्ष्य मुझे पहले ये बताइए what is I cap? हम काफी कर चुके हैं problems. लक्ष्य, my voice is. लक्ष्य, tell me yes or no. क्योंकि अगर नहीं पता then I will tell you. लक्ष्य, लक्ष्य yes or no. लक्ष्य हम कंटिन्यू नहीं करेंगे अगर आप बताएंगे, ठीक है? क्योंकि ये बेसिक है, अगर ये नहीं पता आगे प्रॉब्लम होगी. नहीं पता देन आई विल टेल यू. आपको पता है, प्लीज शेयर योर नॉलेज. नेक्स्ट, आई इज अ यूनिट वेक्टर है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1. तो आई डॉट आई मींस मैग्नीट्यूड ऑफ आई इनटू कॉस. अब सेम वेक्टर है तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री. So this is equal to, this is 1 into 1 into 1. Final answer is 1. So this is equal to 1. This is equal to 1. Okay. Next, I dot J, J dot K, I dot K. खुश कितना होगा ये? Very good question. This is 0. Okay. Kush, please note down this, confirm me, then we will start then we will continue this. Okay, good. Next one, 6. The angle between
two non-zero vectors between two non-zero vectors A and B, A and B. A and B is given by cos theta is equal to A dot B by magnitude of A, magnitude of B. ठीक है, तो ये कुछ न्यू फॉर्मूला नहीं है, बस यहाँ से आया A dot B is equal to magnitude of A, magnitude of B into cos theta. बस यहाँ से टर्म्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया. Please note down this question and confirm. ठीक है, cos theta हो गया तो यहाँ से थीटा फाइंड कर लेंगे. So theta आ जाएगा, theta is equal to cos inverse A dot B by magnitude of A, magnitude of B. Now seventh property, the scalar product, the scalar product is commutative. The scalar product is commutative. So what does this mean? This means A dot B is equal to B dot A. Okay, commutative means A जैसे multiplication या addition होता है, A plus B is equal to B plus A. Similarly, this is also commutative. A dot B and B dot A both are equal. Okay. For this distributive property, okay, better to write this as distributivity of scalar product over addition. Okay, so that means we have three vectors A, B, and C. Then A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. Okay. Next is 9. Let A and B be two vectors. Let A and B be any two vectors. And lambda be any scalar. Then lambda A dot B is equal to lambda A dot B is equal to A dot lambda. ठीक है, तो अगर lambda मल्टीप्लाई हो रहा है which is a scalar quantity, तो वो मूव हो सकता है कहीं भी. ठीक है, उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए, इनको डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर दीजिए, इसको या तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कोई इफेक्ट नहीं आता है डॉट प्रोडक्ट. ओके, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन. Okay, good, very good. Next one. Now next is scalar product. Scalar product in terms of component. Okay, so what does it mean? Suppose we have a vector A that is equal to A1 I cap plus A2 j cap plus A3 k cap. We have another vector B which is equal to B1 I cap plus B2 j cap plus B3 k cap. If you need to find A dot B, ठीक है, A dot B का मतलब A1 I cap plus A2 j cap plus A3 k cap.
dot product b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap. Okay, so a dot b this is equal to, now check here, अगर हम इसको करते हैं इसका dot product with this one, then I dot I will give us 1. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, so this will become a1 b1. This with this I dot j 0 हो जाएगा, similarly I dot k भी 0 हो जाएगा, तो ये सब 0 हो गया. a2 j into this I ये भी 0 हो गया, a2 j into j ये 1 हो गया, so a2 b2 plus a2 j into k ये 0 हो गया, k into k dot I 0 हो गया, k dot j 0 हो गया, k dot k रह गया, so a3 b3. So if we have two vectors, we are multiplying this. तो हम सिर्फ उनके I component, j component and k component को multiply कर देते हैं, add कर देते हैं. Other part will be 0. Kush, this clear? Kush, okay, Kush. Then please note down this, and after this, try this question. If vector A is equal to 2I cap please do the answer. Will you please check the calculation? Good mistake हो रही है. Wish 8 is not the correct answer. Please check the calculation. 236 minus 2 4. तो कितना हो गया 2? Okay, 8. Let me check कहाँ problem है. 12 minus 2. Okay, Kush, this is correct. Sorry. Okay, that's correct. Answer is 8. Very good. Next question. If vector A is equal to, अब इसने coordinates दे दिए हैं, and B is equal to, उसने यहाँ भी coordinate दे दिए 3, 2, -1. Now find A dot B. Okay, Kush, try this. Okay, very good. Then try this question. Find the value of lambda. Find the value of lambda so that the vectors vector A is equal to 2I cap plus lambda j cap plus k cap, and vector B is equal to I cap minus 2j cap, I cap minus 2j cap plus 3k cap are perpendicular to each other. Okay, find the value of lambda so that these two vectors are perpendicular to each other. Please try this. Kush, very good. Please try next question. Find the value of P. Find the value of P for which
for which the vector vector is 3I cap plus 2j cap plus 9k cap, and vector b is I cap plus pj cap and plus 3k cap are first is perpendicular and second is parallel. Okay, please try this. Okay, very good. Second is also correct. Very good, good. Could you please start the next one? Find the angle between the vectors this and this. Kush, just okay. Please do this and then try next one. A root 2 by under root of 5 into 101. Okay, example, theta is equal to cos inverse root 2 by 5 into 101.
Okay. Okay. Kush, please try the next one. Is you need to find theta. Okay. कुछ थीटा की वैल्यू मुझे प्लीज बताइए. Find the theta from this value. Yes, very good. 2 pi by 3. Good. Now next one. This question is if I cap plus j cap plus k cap, comma 2 I cap plus 5 j cap, 3 I cap plus 2 j cap minus 3 k cap and I cap minus 6 j cap minus k cap respectively. Respectively are the position vectors of points A, B, C, and D, and find the angle between the straight line between the straight lines AB and CD. Deduce that AB and CD are collinear. So this came in CBSE 2019. Please try this. Okay, good. You got the answer.
So in this case theta 90 तो नहीं होना चाहिए, 0 आ रहा है कुछ, 0 तो नहीं आ रहा, 0 नहीं है कुछ डॉट प्रोडक्ट, प्लीज अगेन। पाई आएगा, सॉरी, आपने अगर cos थीटा फाइंड किया है then you will get a -1, है ना, वो पाई होगा, सो पैरेलल होगा, थीटा 90 नहीं होगा, पाई हो जाएगा। ये क्लियर है कुछ? ठीक है, एंड डिड्यूस दैट ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर, तो कोलिनियर तो होंगे क्योंकि ए बी एंड सी डी के बीच में जो एंगल है दैट इज पाई, तो एंटी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, वी विल से दिस इज एंटी पैरेलल और अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, सो दीस टू आर कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, सो थीटा जो है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई होगा। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। Projection of vector A on B. Okay. Suppose we have this one. We have this vector A and we have this vector B, and this angle is theta. So actually A on B करेंगे. So take this as A. This is B. तो इसका अगर हम प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं, तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि पुल दिस, ठीक है, इसको मैच कर देते हैं यहाँ से, इसका मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, and let this be O, let this be B, then OB is called the projection of A on B. Okay, so if you have vector A and B, and from this point if you draw a perpendicular, then OB is this one, OB is called the projection of A on B. ठीक, तो हमें ये फाइंड करना है। If we apply simple trick, then we have this cos theta is equal to what? Base by hypotenuse. Okay, so in this case what is a base? Base is this OB by hypotenuse is what? This one, so इसका magnitude ले लेते हैं। So OB क्या आ गया हमारे पास? OB is equal to magnitude of A into cos theta. अगर हम बात करते हैं A dot B की, then A dot B is equal to magnitude of A, magnitude of B into cos theta. So A dot B जो होगा, this is equal to, ठीक है, magnitude of A into cos theta into magnitude of B. ठीक, तो क्या हो जाएगा ये? We need this one है, ये होता है प्रोजेक्शन। So इसका मतलब ये हो जाएगा A dot B by B is equal to magnitude of B is equal to magnitude of A into cos theta. Okay, so that means ऐसे लिख देते हैं magnitude of A cos theta is equal to A dot B by magnitude of B. So we'll say that projection of A on B is equal to what? A dot B by magnitude of B. ठीक है कुछ, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज नहीं होंगी, थीटा नहीं होगा, so we have this formula that projection of A on B, this is equal to projection of A on B is equal to this one, A dot B by magnitude of B. Clear हो कुछ? Okay, Kush, please note on this and confirm me, then we will try some questions on the basis of this. Okay, Kush. Yes, ma'am. The question is find the projection, find the projection of the vector, find the projection of the vector 7i cap, 7i cap
plus j cap minus 4k cap on 2y cap plus 6j cap plus 3k cap. Okay, find the projection of this vector on the next one. Please try this one. Okay, I will say this is a question number 1. Okay, very good. This is correct. So please try this question. Question 2 is let vector A is equal to 4i cap plus 5j cap minus k cap. B is equal to I cap minus 4j cap plus 5k cap. And C is equal to 3i cap plus j cap minus k cap. Find a vector D. Find a vector D such that find a vector D which is perpendicular to both A and B and satisfying D dot C is equal to 21. Okay, please try this one.
Okay, Kush. So the answer is D is equal to 7I cap minus 7J cap minus 7K cap. Very good question. This is correct. Good. Then try this question. Question third. Find magnitude of a vector if for a unit vector A x minus a dot product x plus a is equal to 15. Okay, please try this. Okay, so Kush, this is a magnitude, right? Mod of x is a magnitude, so it will always be positive. Just write the positive answer only. Okay. Next, try this question. If two vectors A and B are such that magnitude of A is equal to 3, magnitude of B is equal to 2, and A dot B, A dot B, this is equal to 6. Find magnitude of A plus, sorry, magnitude of A plus B and magnitude of A minus B. Okay, this is a very good question. Please try this. This is a very different question. So if you have a doubt in this, then please let me know.
Okay, you got the answer. Answer is good. Magnitude of a plus b is 5. Very good. Okay, so I'm not sure that which method you have used. If we will check this one, a plus b dot product with a plus b, then this will give us magnitude of a plus b which is square. Okay, कुछ ये method use किया था? Okay, okay, very good, good. Now similarly, tell me this answer a minus b. Okay. Okay, very good question. That's correct. Okay, then we will start the next one. Good. Next is two bit four. So I will write here that magnitude a plus b is equal to 5 and magnitude of a minus b is equal to 1. Next one. Two vectors a and b prove that the vector magnitude of a b plus magnitude of b a is is orthogonal to the vector magnitude a b minus magnitude of b a. Orthogonal means 90 degrees. So you need to prove that these two vectors are perpendicular to each other. Okay, try this. Okay, Ankush, this question came in CBSE 2020. Okay, Kush, very good. So Kush, you are getting an 0, है ना? Dot product 0 आपके पास आ गया. Okay, very good. Please try this one. Vector a plus b plus c is equal to 0 vector. Magnitude of a is equal to 3. Magnitude of b is equal to 5. Magnitude of c is equal to 7. Fine. Okay, this is 7. Find the angle. Find the angle between a and b.
find the angle between vector A and B. Okay, and this question came 2 times. CBSE 2008 में आया था ये, इसके बाद 2014 में आया same question. Okay, please try this. Kush, let me know if you have any doubt in this. Okay. Now ABC are the magnitude of ABC and given, and we need to find the angle between A and B. ठीक है? सिर्फ A and B में हमें angle चाहिए और third नहीं चाहिए. Means AC, BC. ये सब हमें नहीं चाहिए. So we need to put as relation so that हमें एंगल सिर्फ ए बी में मतलब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है so that उसमें सिर्फ एंगल
बिटवीन ए एंड बी होना चाहिए, एज ए न्यू थर्ड आ जाए, क्योंकि इतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, एक जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, सो दिस इज अ वेरी गुड फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, दैट अगर हम कभी भी ए डॉट बी फाइंड कर रहे हैं विद ए प्लस बी, तो इसका एडवांटेज क्या होता है, और एक तो ये कि आपको ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देता है, कि अगर मैग्नीट्यूड है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सेकेंड थिंग, व्हाट्स अ गुड थिंग अबाउट दिस फॉर्मूला, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, so okay, so this is equal to magnitude of a plus b whole square. So और एडवांटेज क्या होंगे इस फॉर्मूले के, दैट इफ यू नीड दिस, ये भी नहीं है हमारे पास, तो अगर हम यहाँ से एनालाइज करें ए स्क्वायर, फिर इसको लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और ये जो ए डॉट बी और बी डॉट ए, दिस इज द सेम थिंग, सो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ व्हाट्स अ गुड थिंग, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, जस्ट पुट दिस वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी पुट कर दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा। ओके, सो अगर ये भी वैल्यू ये भी पुट कर दिया, बस cos थीटा रह गया, एंड दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो द गुड थिंग अबाउट दिस फॉर्मूला इज कि आपको सारी वैल्यूज दे देता है। या नाउ ट्राई दैट कॉन्सेप्ट ओवर हियर, हमारे पास ए बी है, बी बी है, वी हैव अ सी, हमें बस थीटा फाइंड करना है। ठीक है, so I've given you the hint, this is the hint for this question also, so now please try for 2-3 minutes, नहीं होता then I will help you, but आप कर लेंगे। okay, pi by 3, very good, this is correct। ठीक है, so कुछ I hope आपने ऐसे सॉल्व किया, a plus b is equal to minus c कर दिया, both side magnitude ले लिया, तो a plus b magnitude is equal to magnitude of minus c, so okay, plus b is equal to magnitude of c हो गया, आपने वैल्यूज पुट कर दिया, very good। नेक्स्ट करते हैं, next is question number 6, if a and b are unit vector, if vector a and b are unit vector, are unit vectors inclined at an angle theta, then prove that, then prove that, then prove that sin theta by 2 is equal to 1 by 2 magnitude of a minus magnitude of b. Okay, please try this.
Okay, good, very good. Then try this question. Question number 8. If A and B, if A, B are two vectors, if A, B are two vectors such that magnitude of A plus B is equal to A, okay, then prove that, then prove that, then prove that 2A plus B is perpendicular to B, is perpendicular to B. Please try that. एक कुछ कैसे किया ट्राई करेंगे actually this question came in CBSE 2013 okay कुछ magnitude A plus B is equal to A square कर दिया है ना हाँ ठीक है कुछ okay good next one find the angle between unit vectors find the angle between unit vectors A and B so that under root 3 A minus B is also a unit vector is also a unit vector okay and this question came in CBSE 2020 CBSE 2020 okay please try this
So the answer is 5 by 6. Very good question. This is correct. Good. ठीक है, तो कुछ अभी और भी क्वेश्चंस हैं वो हम कल करते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट हमने स्टार्ट कर दिया, इट विल टेक एटलीस्ट 10 मिनट्स, तो इसलिए हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. योर होमवर्क इज exercise 10.3. Exercise 10.3 complete. Okay, and then कल हम फिर स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स, ठीक है, and plus try to do after this exemplars, ठीक है, and for the next 3-4 classes हमारी 2 hour की क्लास होगी. So tomorrow class is from 10 to 12, okay, and फिर next Saturday class होगी हमारी 7 to 9. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ इसमें 7 to 9 में? ओके ओके, ठीक है खुश, देन कंप्लीट दिस वन. कल फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ओके, यू वेलकम.